Hello friends, welcome to my channel. Hope you all are doing well. Today in my video I am going to talk about the lakes of the world. This video is again going to be both in Hindi as well as in English. So let's get started. First we will start with the large continent of North America. Great Lakes, which are the famous 5 lakes of North America. So whenever we talk about the lakes of North America, of course, our mind goes to the Great Lakes. Great Lakes are a combination and a series of 5 large lakes which are interconnected with each other, and they also connect the adjoining regions with the Atlantic Ocean via St. Lawrence River. These Great Lakes also form the border between Canada as well as United States. So these Great Lakes include Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie, and Lake Ontario. The Great Lakes waterway is an important medium of transportation as well as shipping for Canada as well as United States. They are important fishing grounds as well as they are used for migration as well as trades. So the Great Lake area is actually a hub of various metropolitan cities which are large and important economic centers like Ontario, Chicago, Toronto, Detroit, New York, St. Louis, Rochester, etc. Great Lakes were formed around 20,000 years ago during the last glacial period when the ice started melting. So there was a climatic change and the climate became warmer and the ice sheets they retreated and melted, and this was the formation of the Great Lakes. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स की, जो कि 5 लेक्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 5 बहुत बड़े लेक्स पाए जाते हैं जिनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ये ग्रेट लेक्स फॉर्म करते हैं कनाडा और यूएसए के बीच का सीमा या फिर बॉर्डर। ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए के अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर। ग्रेट लेक्स व्यापार का एक मेजर क्षेत्र है और यहाँ पे कई प्रकार के ट्रेड, मर्चेंडाइज और कई प्रकार के शिप्स भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स भी पाया जाता है। इन लेक्स का पानी मीठा होता है जिसकी वजह से कई प्रकार की मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसलिए ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट लेक्स के आसपास जो एरिया है उसको हम ग्रेट लेक मेगापोलिस भी कहते हैं। इसको हम मेगापोलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट और बड़े और मेट्रोपॉलिटन शहर स्थित हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, डिट्रॉइट, शिकागो, टोरंटो, सेंट लुइस, रोचेस्टर। ग्रेट लेक्स का फॉर्मेशन या फिर गठन, जो हम ओरिजिन भी कहते हैं, वो हुआ था आखिरी हिमयुग में, जब क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे और वातावरण गर्म होने लगा था। उसकी वजह से काफ़ी आइस शीट्स मेल्ट हुए थे जिसकी वजह से ये ग्रेट लेक्स फॉर्म हुए थे। तो आइए हम बात करते हैं हर एक लेक की। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक सुपीरियर की, जो कि सब 5 लेक्स में से सबसे बड़ी लेक है और ये कनाडा और यूएसए के बीच का बॉर्डर क्रिएट करती है। यहाँ पे कई इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जैसे ओंटारियो, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और ऊपर का जो भाग है मिशिगन का वो भी है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इसका टोटल एरिया 82,000 किलोमीटर स्क्वायर है और ये काफ़ी डीप या गहरा लेक भी है। So Lake Superior is the largest amongst all the lakes of the Great Lakes. It is bordering between Canada and USA. There are important cities through which it flows, that is Ontario, Minnesota, Wisconsin and upper part of Michigan. The total land area is 82,000 square kilometers. It is the largest freshwater lake in terms of surface area. Lake Michigan.
Lake Michigan measures up to 57,757 square kilometers. It is the third largest amongst all the other lakes of the continent. Various states are situated along this lake. They are Illinois, Indiana, Michigan, and Wisconsin. It is the most populated lake of North America. The lake is also very popular amongst the tourists because they visit the beaches which are also found here. There are beaches like Sleeping Bear Dunes National Lake Shore and Warren Dune State Park, which are very famous for boating, sailing and fishing. लेक मिशिगन ये तीसरा सबसे बड़ा लेक है पूरे कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका में। इसका टोटल एरिया है 57,757 स्क्वायर किलोमीटर। कई स्टेट्स इसमें पाए जाते हैं या फिर इसके आसपास पाए जाते हैं, जैसे इलिनॉइस है, इंडियाना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। ये सबसे पॉपुलेटेड या यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट स्टेट्स और सिटीज़ पाए जाते हैं। यहाँ के तट काफ़ी पर्यटकों को अट्रैक्ट करने में सक्षम है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीचेस या तट पाए जाते हैं, जैसे कि स्लीपिंग बेयर ड्यून्स नेशनल लेक शोर और वॉरेन ड्यून स्टेट पार्क, जहाँ कई एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बोटिंग है, सेलिंग और फिशिंग। Lake Huron, it is the second largest lake of North America. The total surface area is 59,570 kilometers square. It is also found between Ontario, Canada and United States of Michigan. It is known for its healthy and clean water, so it attracts huge amounts of tourists. Huron is the cleanest amongst all the other lakes of North America. Abundance of fishes are found of various species like wally, sturgeon, trout and whitefish. People also enjoy the clear water and use for swimming and fishing, boating as well as camping. There are 30,000 islands on this lake, including the Lake Manitoulin, which has around 12,000 residents. लेक ह्यूरॉन, जो नॉर्थ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा लेक है, ये ओंटारियो कनाडा और यूएस का मिशिगन स्टेट के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। इसका टोटल एरिया जो है वो है 59,570 किलोमीटर स्क्वायर। इसका पानी काफ़ी सेहतमंद और साफ़ है। ये सारे लेक्स में सबसे साफ़ लेक माना जाता है। यहाँ पे कई प्रकार के मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि वॉली, स्टर्जियन, ट्राउट और वाइट फिश। और इसी की वजह से काफ़ी टूरिस्ट या पर्यटक यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, जो कि स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग, कैंपिंग वगैरह करते हैं। इस लेक में लगभग 30,000 आइलैंड्स पाए जाते हैं और इनमें से मैनिटोलिन है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है, जहाँ पे 12,000 लोग रहते हैं। Then we have Lake Erie, which is around 25,667 kilometers square wide. It borders states like Michigan, New York, Ohio and Pennsylvania. And it is extremely a very populated lake which has got major cities like Ohio, Buffalo, New York, Erie, Pennsylvania, etc., as well as Detroit. The Detroit River also flows across it and drains a lot of water, and also there is a Niagara River. Lake Erie, जिसका टोटल एरिया है 25,667 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे काफ़ी स्टेट्स पाए जाते हैं, जैसे मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो और पेंसिल्वेनिया। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी लेक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट शहर पाए जाते हैं, जैसे ओहियो, बफलो, न्यूयॉर्क, एरी और पेंसिल्वेनिया। इस लेक में डिट्रॉयट रिवर काफ़ी अपने साथ फ्रेश वाटर या फिर साफ़ पानी लेके आती है और ये बेसिकली रिवर नायग्रा में मिल जाती है। Now the last amongst all these 5 lakes is Lake Ontario, which is the 13th largest lake of the world. It has got in the north region the province of Ontario, and in the south it has got the major city of New York. Lake Ontario is Canada's commercial, industrial as well as population heartland, or the main region where all these activities are conducted.
The total surface area is 18,960 kilometers square. This lake also has got the city of Toronto, where two-thirds of Canada's steel is manufactured. लेक ओंटारियो विश्व का 13वां सबसे बड़ा लेक है। इसके उत्तरी भाग में ओंटारियो नाम का राज्य है और साउथ या दक्षिण में न्यूयॉर्क है। ये कनाडा का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यावसायिक एवं सबसे बड़े जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसे कमर्शियल हार्टलैंड भी कहा गया है। इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो है 18,960 किलोमीटर स्क्वायर। टोरंटो शहर लेक ओंटारियो के पास स्थित है। यहाँ पे कनाडा का सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन होता है। Now let us talk about lakes other than the Great Lakes. There are several important and large lakes which are found especially in Canada. One of them is the Great Bear Lake. Bear Lake is the largest lake in Canada. The total surface area is 31,000 square kilometers. It is found in the northwestern side of Canada and it crosses the Arctic Circle. It is located in the boreal forest. Since it crosses the Arctic Circle, it is lying in the frigid zone. Therefore, it is frozen and filled and covered with ice, especially in the winter months, right from November to July. In summer months, when the ice melts, the lake is filled with clear water. This region is mostly occupied by the Line community. These people they transport trucks and lots of goods across the lake and which is mostly frozen in the winter season to deliver supplies to various parts of the Arctic region, especially the communities which live in the northern parts. ग्रेट बेयर लेक जो कनाडा का सबसे बड़ा लेक है और इसका टोटल लैंड एरिया है 31,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये कनाडा के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है जहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है और यहाँ बेसिकली आर्कटिक सर्कल भी है। क्योंकि आर्कटिक सर्कल इस लेक में से होके जाती है इसीलिए ये लेक फ्रिजिड जोन में आता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। ठंड के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर होता है। यहाँ पे डिलाइन नाम का एक कम्युनिटी रहता है। ये कम्युनिटी ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे खूब सारे सप्लाईज लेके जाते हैं, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कि आर्कटिक और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजिड या फ्रोज़न जोन में रहते हैं। इस लेक में कई प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती हैं जैसे कि आर्कटिक ग्रेलिंग, ट्राउट और वाइट फिश जो कि प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब हम बात करेंगे ग्रेट स्लेव लेक की जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा लेक है। इसकी गहराई लगभग 41 मीटर है। ये लेक कनाडा के उत्तर पश्चिमी इलाके या एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे कनाडा का आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, स्पेशली येलो नाइफ की तरफ, और यहाँ पे विंटर कैंप, हडसन पे, कंपनी पोस्ट और फोर्ट रिलायंस की तरफ काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। इस जगह पे फ़र का व्यापार हुआ करता था लेकिन वो अभी प्रोहिबिटेड है, इसीलिए फ़िशिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रेड है। So the Great Slave Lake is the deepest in North America. It has a depth of 41 meters and it is situated in the northwestern territory of Canada. More than half of the population of Canada lives here, especially in the regions near Yellowknife and abandoned winter camp of Hudson's Bay, Company Post and Fort Reliance. This region had a very strong fur as well as fishing trade. Since fur trade has been abandoned, therefore, this region basically is dependent upon its fishing trade. A lot of fishes are found here like Arctic grayling, trout, northern pike as well as whitefish.
There's another lake called Lake Winnipeg, which is a very large as well as a shallow lake. It is found in Manitoba in Canada. Its depth is 36 meters and the total area is 25,514 kilometers square. There are white beaches along Lake Winnipeg, which attracts huge amounts of tourists and locals, especially in the summer months. This region also has abundance of fishes as well as commercial fishing is practiced here. So around $30 million fishing industry is situated here. Now let's talk about the lakes of South America. The lakes of South America has a speciality. They are either confined to the Andes or they are found at the foothills of the Andes. These lakes are not very big, but they are very beautiful and scenic and also are recommended for trekking. तो अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिकन लेक्स की। साउथ अमेरिकन लेक्स की एक स्पेशलिटी होती है क्योंकि ये एंडीज़ में पाए जाते हैं। एंडीज़ एक माउंटेन रेंज है। साउथ अमेरिकन लेक्स बहुत बड़े नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेक टिटिकाका की, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। ये बोलिविया पेरू में स्थित है। ये सबसे उच्चतम नौगम्य या नेविगेबल लेक है पूरे विश्व में। लेक टिटिकाका की हाइट है 12,507 फीट। लेक टिटिकाका एंडीज माउंटेन्स में लोकेटेड है और इसका स्ट्रेच है बोलिविया और पेरू में और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 3,232 स्क्वायर। लेक टिटिकाका का बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे जन्म हुआ था इनका सिविलाइजेशन का। इनका सिविलाइजेशन एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। कई कलाकृतियाँ और खंडर इस लेक के नीचे से पाए गए हैं, जो कि इनका परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस लेक में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। लगभग 25 नदियाँ इस लेक में मिलती हैं, जिसकी वजह से इस जगह में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। Lake Titicaca is the largest lake of South America. It rises in the Andes Mountains and stretches between Bolivia and Peru. It is the world's highest navigable lake. Its height is around 12,507 feet. The total surface area is 3,232 square miles. Lake Titicaca is very famous for its rich culture and history. It was the birthplace of the Inca civilization, which is one of the oldest civilizations of the world. Here we also find several ruins which were once part of the flourishing Inca civilization. Several artifacts as well as ruins were found at the bottom of the lake, which was a part of the Inca's tradition. This lake is also home of various kinds of species of fishes like the killifish as well as catfish. There are also various other kinds of species of animals and wildlife which is found in this lake. Now let's talk about the second largest lake of South America, Lake Papa of Bolivia, which has actually become a dried lake. This lake has declined over the past decade. Used to be South America's second largest lake, area being 1,232 square kilometers, but now it is dried up because of various reasons. It was once fed by the Desaguadero River, but now people have actually shifted the direction of the tributary rivers which used to feed this lake. That is why it has dried up. And some of them also blame the climatic changes like the El Nino effect, which has led to the drying up and desertification of this lake. Now what is left behind is a salty land of mud instead of a huge and large lake. लेक पाओ जो कि बोलिविया में पाया जाता है और ये साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा लेक है
लेकिन ये लेक बहुत सारे रीज़न्स की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है या फिर सूख गया है। कुछ लोग इसका रीज़न क्लाइमेटिक चेंज बताते हैं, जो कि एल नीनो इफ़ेक्ट है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि कई नदियाँ इस लेक में फ़्लो करती थी, जिनका डायरेक्शन लोगों ने चेंज कर दिया या बदल दिया, जिसकी वजह से ये लेक अभी सूख गया है। Argentino Lake, which is situated in Argentina. It is the largest freshwater lake of Argentina. It is located at Los Glaciares National Park of Argentina. The total surface area is 1,466 square kilometers, and it is also a very deep lake, which is 150 meters deep. It drains its water in Santa Cruz River that flows into the Atlantic Ocean. So basically, it's a glaciated lake. Thank you all for visiting my channel. So please like the video if you've actually enjoyed it, and subscribe to my channel, and also stay tuned for the next part of this video.